Hello everyone, today's we have the topic panic anxiety disorder. So what is panic anxiety disorder? Here is the definition. We can learn about the panic anxiety disorder. Panic disorder is characterized by anxiety which is intermittent and unrelated to the particular circumstance. Unlike phobic anxiety disorder where though anxiety is intermittent, it occurs only in particular situation. Okay, so panic disorder is characterized by anxiety disorder which is intermittent and unrelated to the particular circumstance. It is the intermittent and it is unrelated to particular circumstance. Unlike phobic anxiety disorder where though anxiety is intermittent, it occurs only particular situation but it not depend on the unrelated to a particular one circumstance or one situations. It is the intermittent and unrelated to the particular circumstance. Okay, the central feature is the occurrence of the panic attack. So the central feature is the occurrence of panic attack. Example: sudden attack of anxiety in which physical symptoms predominate and are accompanied by fear of serious consequences such as heart attack. Okay, in the central feature, in the central feature is the occurrence of panic attack. Okay, example: sudden attack of anxiety in which physical symptoms predominant are accompanied by fear or a serious consequence such as heart attack. Okay, so the central feature is the occurrence of the panic attack. Panic attack में आपका example sudden attack of anxiety होना which is physical symptoms इसमें आपका present होना predominant and accompanied by fear of a serious consequence such as heart attack जैसी condition होना. Epidemiology है इसका the lifetime prevalence of the fan disorder is 1.5 to 2%. It is seen 2 to 3 times more often in the females में ज़्यादा देखने को मिलता है 2 to 3 times as comparison to male. क्लासिफिकेशन इसका F41.0 पैनिक डिसऑर्डर, F41.Y जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, F41.2 मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, F41.9 अदर स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर. ओके, so here F41.0 पैनिक डिसऑर्डर. व्हाट इज ईटियोलॉजी? अभी किस रीजन की वजह से हो सकता है? तो जेनेटिक थ्योरी की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, बायोकेमिकल थ्योरी की वजह से हो सकता है, साइकोडायनामिक थ्योरी की वजह से हो सकता है, बिहेवियरल थ्योरी की वजह से हो सकता है, डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकता है. जेनेटिक थ्योरी मीन्स की मोस्ट फ्रीक्वेंट अमंग रिलेटिव ऑफ द पेशेंट विथ दिस कंडीशन and 15 to 20% of the first degree relative of patient with anxiety disorder themselves. Okay, so most this is the most frequent among it is the most frequent among relative of the patient with this condition. About 15 to 20% of the first degree relative of patient with anxiety disorder themselves. Rate of the monozygotic twins of patient with panic disorder is 80%. Okay, rate of the monozygotic twins of patient with panic disorder is 80%. Now biochemistry theory, अल्ट्रेशन ऑफ द गाबा लेवल, ये अल्ट्रेशन ऑफ गाबा लेवल में होने की वजह से होता है. एंड साइकोडायनामिक थ्योरी, एंजाइटी इज यूजुअली डील विद द डिप्रेशन. ऑलराइट, तो एंजाइटी यूजुअली किस वजह से होती है? आपको डिप्रेशन की वजह से होती है. व्हेन डिप्रेशन fail to function adequately, other secondary defense mechanism of ego come into the action. Okay, so when repression fail to function adequately, अब ये कब होती है? जब हमारा रिप्रेशन है वो आपका फेल हो जाता है एडुकेटली फंक्शन करने के लिए. अदर सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द ईगो कम इनटू द एक्शन. अब इसकी वजह से क्या होता है? अदर आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ईगो, वो आपका एक्शन में आता है. इन एंजाइटी डिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली एंड द सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट एक्टिवेटेड. ओके, अब इसकी वजह से फर्दर क्या होता है? इन एंजाइटी रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली. अब एंजाइटी में क्या होता है? रिप्रेशन आपका फेल होता है एडिक्वेटली फंक्शन करने से.
सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट एक्टिवेटेड, इसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म आपका एक्टिवेट नहीं होता है, हेंस एंजाइटी कम टू दी फोर फ्रंट, इसकी वजह से एंजाइटी वो आपके फोर फ्रंट में आती है, आपके सामने आती है। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है, एंजाइटी इज द व्यूड एज अ अनकंडीशनल इनहेरिटेंट रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू अ पेनफुल स्टिमुलाई। ओके, सो बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पर क्या बता रही है, बिहेवियरल थेरेपी से दैट एंजाइटी इज व्यू एज अ अनकंडीशनल, इट इज अ अनकंडीशनल इनहेरिटेंट रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू पेनफुल स्टिमुलाई, किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई को लेकर के इंडिविजुअल का अनकंडीशनल इनहेरिटेंट रिस्पॉन्स होना, इट इज नोन एज द बिहेवियरल थेरेपी। Next, the cognitive therapy. According to this theory, anxiety is related to cognitive distortion and negative autonomic thought. Okay, so cognitive theory say that according to this theory, anxiety is related to cognitive distortion and negative automatic thoughts. According to this condition, according to this theory, anxiety is related to cognitive distortion. Okay, so according to this theory के according anxiety is related to cognitive distortion. Anxiety is a cognitive distortion and negative autonomic thoughts. Okay, so it is a cognitive distortion and a negative autonomic thoughts. Next, the panic trigger. Trigger of the panic can include the following. First is the injury, example accident and surgery की वजह से हो सकता है, and illness की वजह से हो सकता है, interpersonal conflict और loss की वजह से हो सकता है, use of cannabis की वजह से हो सकता है, can be associated with the panic attack, perhaps because of the breath holding, use of the stimulants such as caffeine, decongestant, cocaine, and symptomatics, example एम्फीटामाइन एमडीएमए की वजह से हो सकता है, certain settings such as store and public transportation, especially in the patient with the agoraphobia, sertraline which can induce panic in the previously asymptomatic patient, the selective serotonin reuptake inhibitor SSRI, discontinuation syndrome which can induce symptoms similar to those experienced by the panic patient. Correct. Clinical features is there, shortness of the breath and something sensation, depersonalization or derealization, heartbeat rapid and the pounding, choking, chest discomfort or the pain, palpitation, sweating, dizziness, unsteady feeling of faintness, okay, nausea or abdominal discomfort, depersonalization or derealization, numbness or tingling sensation, flushes or chills, trembling or shaking, fear of dying or having a heart attack, fear of being out of control, agoraphobia, depression. Alright, so all these are clinical symptoms are having their shortness of the breath and smothering sensation, heartbeat rapid and pounding, choking chest or discomfort, palpitation, sweating, dizziness, steady feeling of fainting, nausea or abdominal discomfort, depersonalization or derealization, numbness or tingling sensation, flushes or chills, trembling or shaking, fear of dying or having a heart attack, fear of being out of the control, agoraphobia, and depression. All these are the clinical features are there in panic anxiety. Now, panic attack, sudden, recurrent or no reason. पैनिक अटैक शुड भी सडन हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, नो रीजन की वजह से हो सकता है. हार्ट अटैक, आई एम गोइंग टू डाई, आई फील go mad. Okay, so patient will experience. First we have more fear, then anxiety, then panic attack, fear of another one, more anxiety and another attack. This is the cycle having there. Of course क्या होता है, onset early third decade,
with often a chronic course. Okay, so onset क्या है, onset is the early third decade with often a chronic course. Episode is usually sudden in onset and last for a few minutes. Okay, episode is usually sudden in onset हो सकता है और last few minute में आपका हो सकता है. Next है diagnostic physical condition and drug effect. Serum glucose measurement to rule out hypoglycemia. Thyroid function test to rule out hyperthyroidism. Urine and serum toxicology test to rule out presence of the psychoactive substance such as barbiturate, caffeine, and amphetamines based on the DSM-5 criteria. Okay, so here is the diagnostic test. First is the physical condition and drug effect. Second is the serum glucose measurement to rule out hypoglycemia. And next one is the thyroid function test to rule out of the hyperthyroidism. Urine and serum toxicology test to rule out presence of the psychoactive substance such as barbiturate, caffeine, and amphetamines based on the DSM-5. Next is the differential diagnosis. Treatment modalities. Differential diagnosis is the GAPD, frequent spontaneous attack and avoidance. GAD, constant worry and physical symptom. OCD, excessive repetitive thought and behavior. SP means embarrassment of the humiliation in social situation. PTSD, thought and experience of horrible event, right? Now treatment modalities. What treatment should we follow? First step pharmacotherapy, second behavioral therapy, and third one is the cognitive therapy. So first step pharmacotherapy, selective serotonin reuptake inhibitor SSRIs are the first line agent for the long term management of anxiety disorder. Selective serotonin reuptake inhibitor and sertraline, paroxetine, fluvoxetine, and citalopram. Okay, sertraline, paroxetine, fluvoxetine, and citalopram. These are the pharmacological therapies we should provide the patient. Next, benzodiazepines by binding to specific receptor site. Intermediate acting benzodiazepines appear to the potentiate the effect of the GABA and facilitate inhibitory GABA neurotransmitter and other inhibitory transmitters. Lorazepam, clonazepam, alprazolam, and diazepam. These are medication. This is the benzodiazepines: lorazepam, clonazepam, alprazolam, and diazepam. Next is serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. It's indicated for the panic disorder. Next, venlafaxine. And behavioral therapies, relaxation technique, deep breathing exercise, and progressive relaxation, positive verbalization or guided imaginary listening to a calming music. Cognitive therapy teach the patient to replace negative thought with more realistic positive ways of viewing the attack, help the patient to identify possible triggers for the panic attack such as particular thought or situation or even a slight change in the heartbeat, help the patient to identify and evaluate the thought that precede anxiety and the restructure them to gain a more realistic perception. Put it. Next step, prognosis. Long-term prognosis is usually good with almost 65% of the patient with panic disorder achieving remissions typically with 6 months. The risk of coronary artery disease in patients with panic disorder is nearly doubled
appropriate pharmacologic therapy and cognitive behavioral therapy individually or in combination are the effective is in more than 85% of the cases. Right? Okay, so thank you for watching this. Let's quickly sum up. यहाँ पर हमने जाना पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर आपका किसी पार्टिकुलर वन सिचुएशन की वजह से या वन इवेंट की वजह से नहीं हो सकता है। इसमें आपका मैनी वेरियस फैक्टर आपके इंक्लूड करते हैं जिसकी वजह से आपको होता है, और जिसमें आपका हार्ट रेट का आपका इंक्रीज होना या आपका सडन हो सकता है, ऑनसेट हो सकता है, कुछ आपके फ्यू मिनट में आपका पैनिक अटैक आपको हो सकता है। और इसमें जो बिहेवियरल थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, साइको मेडिकेशन की मदद से हम इसे फार्माकोलॉजी की मदद से अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। कॉमन जो मेडिकेशन होती है सीरोटोनिन री अपटेक वगैरह की मदद से हम इससे क्यूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैनिक डिसऑर्डर के बारे में देखा। पैनिक डिसऑर्डर इसका एंजाइटी डिसऑर्डर होता है विच इज इंटरमिटेंट एंड unrelated to the particular circumstance, like आपका unlike phobic anxiety disorder where though anxiety is intermittent it occur in the particular situation. The central feature of the occurrence of panic attack is sudden attack of anxiety which is physical symptom predominant and accompanied with fear or serious sequence such as heart attack. Epidemiology है इसका 1.222% prevalence rate of the lifetime. It is seen in 2 to 3 times more often in the females than males. Right? क्लासिफिकेशन है पैनिक डिसऑर्डर फर्स्ट। हियर इज द पैनिक डिसऑर्डर फर्स्ट जो हमने देखा। इटियोलॉजी जेनेटिक थ्योरी की वजह से हो सकता है, बायोकेमिकल थ्योरी की वजह से हो सकता है, एंड बिहेवियरल थ्योरी एंड साइकोडायनामिक थ्योरी की वजह से हो सकता है। ऑल दीज थ्योरीज आर डिफरेंट। जेनेटिक थ्योरी कहती है मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है अमंग रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट विद दिस कंडीशन। अबाउट 15 to 20% of the first degree relative of patient with anxiety disorder themselves। rate of the monozygotic twins of patient with panic disorder में इसके चांसेस होते हैं 80% होने का। बायोकेमिकल थ्योरी कहती है अल्ट्रेशन ऑफ द गाबा लेवल में होने की वजह से हो सकता है। साइकोडायनामिक थ्योरी कहती है एंजाइटी इज यूजुअली डील विद द रिप्रेशन की वजह से हो सकता है। व्हेन द रिप्रेशन फेल टू फंक्शन एडिक्वेटली other secondary defense mechanism of ego come into the action, and in anxiety repression fail to function adequately, the second defense mechanism are not activated, hence anxiety come to the forefront. ओके, बिहेवियरल थ्योरी की वजह से हो सकता है। बिहेवियरल थ्योरी कहती है इट इज व्यू एज द अनकंडीशनल इनहेरिटेंट रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू द पेनफुल स्टिमुलाई। ऑलराइट, कॉग्निटिव थ्योरी कहती है दिस थ्योरी एंजाइटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एंड नेगेटिव ऑटोनॉमिक थॉट। तो डिफरेंट थ्योरी के अपने अपने यहाँ पर व्यूज हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है क्लिनिकल फीचर इसमें हमने देखा जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, हार्ट रेट आपका रैपिड होना, आपका चोकिंग चेस्ट होना, डिस्कम्फर्ट होना, पाल्पिटेशन होना, स्वेलिंग एंड डिजीनेस होना, नोसिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, एंड डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन होना, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होना, फ्लसेस और चिल्स होना, ट्रिमलिंग और सिकिंग होना, fear of dying or having heart attack होना, fear of being out of the control, and agoraphobia and depression होना। Got it? So I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching. Bye bye.